गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अष्टांग इंटरनल ऑर्गन्स योगा के अष्टांग योगा के ये थर्ड पार्ट से समाधि। फर्स्ट वीडियो में हमने धारणा देखे, सेकंड में ध्यान देखे और थर्ड में जो है अब हम समाधि देखेंगे। इन महर्षि पतंजलि योगा दर्शन समाधि इज द एट and the last step, and it is the third step in the Antarang Yoga. The subject of dharana, dhyan and samadhi is one and the same, but the degree of concentration with the subject goes to increasing. महर्षि पतंजलि योग दर्शन में समाधि जो है एक अंतिम आठवां यानी एट लास्ट पार्ट है और थर्ड स्टेप जो है अंतरंग योगा का थर्ड स्टेप है। क्या दिया है कि योगा दर्शन में जो समाधि जो है ये लास्ट स्टेप यानी उसका लास्ट पार्ट एट हैगा और अंतरंग योगा में उसका स्टेप थर्ड है। तो द सब्जेक्ट ऑफ धारणा, और धारणा क्या है उसका मेन सब्जेक्ट है। द सब्जेक्ट ऑफ धारणा, ध्यान एंड समाधि इज वन ऑफ द सेम। क्या दिया है कि धारणा, ध्यान, समाधि क्या है, ये सब एक ही सब्जेक्ट है, बट द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन विद द सब्जेक्ट गोज टू इंक्रीज। बस जो है इसकी एकाग्रता जो है वो बढ़ती जाती है। कि पहले धारणा की अलग है कि पहले हम किसी चीज़ के लिए एकाग्रता करते हैं, फिर उसका ध्यान करते, फिर उसके बाद समाधि। तो यानी इसकी जो डिग्री जो वो है क्या खाली वो चेंज हो जाती है। व्हेन द मेडिटेटर एंड मेडिटेशन बोथ गेट engrossed in the aim, samadhi is realized, then only the aim in experience in samadhi. That is to say, samadhi is fulfilled as a result of continuous and constant meditation and mystery. There, the sadhaka automatically gets absorbed in samadhi. क्या दिया है कि इसका ध्येय मेडिटेटर यानी जो ध्येय जो है वो ध्यान के साथ जॉइंट रहता है। जो हमारा ध्येय यानी हमारा ध्यान और ध्येय जो है वो एक दूसरे में विलीन रहता है और तब जाके क्या है समाधि जो है वो क्या फक्त ध्येयની અનુભૂતિ થાય છે। અર્થાત સતત ધ્યાન કરવાથી અને તેમાં પરંપરાગત આવે ત્યારે તેના પરિણોપે સમાધિ પ્રગટે છે, अर्थात આપોઆપ समाधिમાં સરી જાય છે। यानी क्या कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो वो हम ऑटोमेटिकली जो है क्या है वो समाधि में चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो दिया डेफिनेशन ऑफ समाधि, समाधि की डेफिनेशन क्या है ये हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि यानी महर्षि पतंजलि का जो योगा शास्त्र है उसके थ्रू हम डेफिनेशन देखेंगे। व्हेन द मेडिटेशन बिकम्स enlightened in the form of aim only and free from its own self, it is called samadhi. Meditation becomes similar of the aim and free from the process of meditation means samadhi. क्या है कि ધ્યાન જ ધ્યેય માત્ર રૂપે પ્રકાશ પામનારું અને પોતાના સ્વરૂપી રહિત જેવું થાય તેને સમાધિ કહે છે। એટલે કે ધ્યાન ધ્યેય બની જાય અને ध्यान करता रहित थी जाए એટલે समाधि। यानी जो ध्यान जो है वो क्या है हमारा ध्येय बन जाता है और उससे क्या है उसे समाधि कहते हैं। मेडिटेशन इज एक्सेलेंस एंड मेच्योर स्टेज मीन्स समाधि। ध्यान श्रेष्ठता અને પરિપક્વ અવસ્થા એટલે સમાધિ। According to महर्षि Yajnavalkya, the stage of oneness, unity of the individual souls, Jivatma and the God Paramatma in Samadhi.
મહાઋષિ યજ્ઞવલ્ક के પ્રમાણે जो है हमारी जीवात्मा અને परमात्माને एक અવસ્થાનું સમાધિ है। यानी क्या है, महर्षि अकॉर्डिंग टू महर्षि याज्ञवल्क्य के प्रमाणे जो है हमारी जीवन आत्मा और परमात्माની एक अवस्थाનું नाम समाधि છે। क्या दिया है यहाँ पे, फिर से मैं बता रही हूँ कि जीवन आत्मा और परमात्मा का नाम क्या है, समाधि है। When in meditation only the aim, dhya is experienced and the consciousness sense of ons from become zero, that state is called સમાધિ। કે ધ્યાનમાં જ્યારે ફક્ત ધ્યેયનો અનુભવ થાય અને પોતાનું સ્વરૂપને ભાન શૂન્ય જેવું થાય તે અवस्थाને समाधि કહે છે। यानी ध्यान करने से जो हमारा ध्येय जो है यानी अपना शरीर जो है अपने शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। शून्य हो जाता है यानी हम अपने ध्यान करने से, समाधि करने से हम अपने शरीर को फील नहीं करते हैं, तो उससे हमारा शरीर क्या वो जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उसको हम समाधि कहते हैं। समाधि मीन्स रिस्ट्रेंट फ्रॉम टेंडनेस ऑफ द माइंड। समाधि એટલે ચિત્તની વૃત્તિઓને સંપૂર્ણ નિરોધ। It is said in Hatha Yoga Pradipika that the salt dissolved in the water itself, even then it does not appear in the form of salt, as it has become one with water. Only water appears in the same way in the stage of samadhi. Meditator, sadhaka and meditation have become one and identical with the aim, hence there is only presence of aim. હાર્ડ યોગ પ્રદીપિકામાં જણાવ્યું છે કે જેમ પાણીમાં ઓગળી ગયેલું મીઠું પાણીમાં હોવા છતાં પાણી સાથે એકરૂપ થઈ જવાથી મીઠાના રૂપમાં દેખાતું નથી, પરંતુ ફક્ત પાણી જ દેખાય છે, તેમ સમાધિની અવસ્થામાં ધ્યેયતા સાધક અને ધ્યાનની ધ્યેય સાથે स्वरूप થઈ ગયેલા હોવાથી ફક્ત ધ્યેયની उपस्थित હોય છે। यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल बताया कि जिस तरह हम पानी में जो है मीठू यानी वो पानी में जो है हम नमक को मिला देते हैं और वो उसके अंदर जो है वो घुल जाता है, सॉल्ट जो है घुल जाता है, मगर उस वक्त जो है हमको सिर्फ पानी दिखाई देता है, सॉल्ट नहीं दिखाई देता है। इसी तरह जो है समाधि का जो है वो मेडिटेशन क्या है, वो समाधि दिखाई देती है, उसकी मेडिटेशन यानी उसका ध्येय उपस्थित होता है, यानी खाली उनका शरीर के तौर पे दिखाई देता है। Thus this samadhi, the mind control from the tendencies attains equality, there remains no extensions of the mind. In other words, in the stage of samadhi, the mind becomes no mind. तो આમ સમાધિમાં વૃત્તિઓનો નિરોધ પામેલું ચિત્ત સમસ્ત અવસ્થા ધારણ કરે છે, અર્થાત મન કે ચિત્તનું અસ્તિત્વ જ ન રહેતું નથી। બીજું શબ્દોમાં કહીએ તો સમાધિની અવસ્થામાં मन आमन बनी जाए छे। यानी जो समाधि की अवस्था में जो हमारा मन जो है ना वो कंट्रोल हो जाता है, हमको बस सुकून मिलता है, और वो जो मन जो है ना हमारा मन रहता है नहीं वो और चेंज हो जाता है, अमन हो जाता है, एकदम शांति हो जाती है। द माइंड गेट्स एब्जॉर्ब्ड, देयर इज कंप्लीट कंसंट्रेशन इन द स्टेज ऑफ मेडिटेशन, इवन द साधका इज कॉन्शियस अबाउट दिस ऑन natural stage, but in samadhi there is only the feeling of excitations of mind. The consciousness of natural extensions is removed. The yogi experience himself only in the form of spirit, which is the pure, the true form of the Atman. At last the feeling of non-duality of the Atma Paramatma manifests and the yogis gets completely absorbed in it. He attains liberation, emancipation of moksha। કે મન
મનનો લય થઈ જાય છે. ધ્યેયની અવસ્થામાં અખંડ એકાગ્રતા હોવા છતાં સાધક પોતાની પ્રકૃતિ અવસ્થા વિશે સભાન હોય છે, પરંતુ સમાધિમાં માત્ર ચૈતસિક અસ્તિત્વ જ ભાવ રહે છે. પ્રાકૃતિક અસ્તિત્વની સભાનતા દૂર થાય છે. યોગ પોતાને માત્ર ચૈતન્ય સ્વરૂપે અનુભવે છે, જે આત્માનું શુદ્ધ અને સાચું સ્વરૂપ છે. અંતે આત્માનો પરમાત્મા આધેય ભાવ પ્રગટે છે અને યોગી સંપૂર્ણપણે તેના વિલીન થઈ જાય છે, अर्थात तेनी मुक्ति के मोक्ष થઈ જાય છે. कहने दिया है कि समाधि करने से जो है, जो हमारी जो अवस्था जो होती है वो एक चीज़ पे एकाग्रता हो जाती है. हमको कोई चीज़ का हमको भान नहीं होता है और जो प्रकृति अस्तित्व तो होती है उसका हमको भान ही नहीं रहता, वो सब दूर हो जाता है और हमारी जो आत्मा जो है वो क्या शुद्ध हो जाती है, साचू स्वरूप हो जाता है और हमारा जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है और हम जो संपूर्ण रीते उसके अंदर तल्लीन हो जाते हैं और हमको क्या है मुक्ति या मोक्ष मिलता है. In samadhi, the aim, the meditate and the meditation become direct experience of Brahma becomes possible. He becomes free from the bondage of place, the and time. It is called samadhi, in which the aim alone awaked. In Sri Sakanda Purana, the mind becomes steady for 12 days. It is called samadhi. સમાધિમાં ધ્યેય, ધૈર્યતા અને ધ્યાન એકરૂપ બને છે. क्या दिया है कि સમાધિમાં એમ, મેડિટેટર અને મેડિશન ये क्या है जो एक हो जाता है, એટલે કે બ્રહ્મની પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ શક્ય બને છે. તે સ્થળ અને કાળ બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. क्या है कि हमारा एम यानी ध्येय, हमारा मकसद, मेडिटेटर और ध्यान मेडिटेशन, क्या है तीनों एक हो जाता है और इससे हमको ऐसा अनुभव होता है कि हम जो है इस स्तर से जो है इस बंधन से हमको मुक्ति मिल गए है. इन श्री સકાંદા પુરાના ધ્યેય માત્રનો જેમાં સ્કૃણ હોય તેને સમાધિ કહેવાય. સમાધિ ઇઝ વિચ એમ ધ એલોન્સ અવેક, यानी श्री स्कंद पुराणाમાં ધ માઇન્ડ बिकम्स स्टडी फॉर 12 days इन द कोल्ड समाधि. क्या अर्थात 12 દિવસ चित्तनी स्थिरता થાય તેને समाधि कहे. यानी जो समाधि जो है 12 દિવસ की होती है, तो स्थिरता हो उसे क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं. टाइप्स ऑफ समाधि. समाधि के प्रकार कितने हैं? समाधि इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स. समाधि के 3 प्रकार है. नंबर 1 सबीज समाधि ऑफ संप्रनायत, नॉट फ्री फ्रॉम थॉट. समाधि ऑफ सविकल्पा समाधि. नंबर 2 निवृत्त समाधि और असमम प्रणायत समाधि और निवृकल पल्पा समाध. नंबर 3 धर्मा में मेधा समाधि. तो इसके आगे हम 1 बाय 1 करके तीनों समाधि के बारे में एक शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी. सब्जी समाधि और संप्राय समाधि. इन दिस समाधि द सब्जेक्ट्स ऑफ द एम प्रेजेंट साधका enters in the region of pranaya intelligence beyond the mind, hence it is called સંપ્રનાયત સમાધિ. क्या દે કે આ સમાધિમાં ધ્યેય વિશેની ઉપસ્થિતિ હોય છે, જેમાં સાધક મન પરથી પ્રજ્ઞા બુદ્ધિની ભૂમિકા પ્રવેશ કરે છે, તેથી તેને સંપ્રગત સમાધિ કહે છે. નંબર 2 નિવૃત્ત સમાધિ ઓફ અસ્મા પ્રણાયત સમાધિ. When the dependence of M subjects also drops down because the continuous practice of Sabji Samadhi along with the M subjects
and there is only experience of one's own pure from the asmapranaya samadhi of nirabji samadhi is accomplished. ધ્યેય વિષયની ઉપસ્થિતિવાળા સભી સમાધિના સતત અભ્યાસથી જ્યારે સાધકને ધ્યેય વસ્તુને અવલંબન પણ છૂટી જાય અને ફક્ત પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ થાય ત્યારે અસંગ પ્રજ્ઞા સમાધિ કે નિર્ભય સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે. 3 નંબર ધારમા મેધા સમાધિ. ધ સાધકા ગેન્સ નોલેજ ઓફ ડીપ mysteries in the mind through continuous practice of sabji and nirabji samadhi. He who is free from desire of this knowledge also attains is viveka buddhi, power of discriminations awakened, and with the strain of knowledge of viveka buddhi the sadhaka accomplishes dharma medha samadhi. ધર્મ મેધ સમાધિ સભીજ અને નિર્ભીજ સમાધિના સતત અભ્યાસથી સાધકને મનમાં ગ્રહણ રહસ્યનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. આ જ્ઞાન પ્રત્યે વિરકત રહેનારના સ્વાર્થા વિવેક બુદ્ધિ જાગૃત થાય છે અને વિવેક બુદ્ધિના જ્ઞાનના સમર્થનથી साधकने धर्म में समाधि प्राप्त થાય છે. तो यहाँ पे जो हमारा लेसन कंप्लीट होता है. ओके बाय.